Good morning students, welcome to Common Scanpit Odisha. We will start with the remaining part of GST, that is indirect taxation, and indirect taxation ro gote most important chapter, that is registration. ठीक अछि registration ro we are expecting 5 to 6 marks question always. ताडो अधिक भी आसी पारिया but minimum 5 to 6 सबले पडछ. Okay, तो प्री जीएसटी रेजिम रे कोन होतिला, पोस्ट जीएसटी रेजिम रे कोन होतिला. This classification is required in every chapter, but registration रे तो सेडा requirement नहीं. काहेंगी जदि जीएसटी पर्व्यू अंडर को आछि then only registration chapter टा applicable होछ. Fine. तो under the pre GST regime, service providers registered with the service tax department, traders registered with the VAT laws, manufacturers registered with the central excise and VAT. एडा जो अच्छी, this is in your workbook. जदि कि workbook refer करची, this was a bit question in that. पढ़थिलु तो workbook. तो ये छि आउ एबे तो अच्छी आउ थरे पुणी आसीबो आगे फाइनल रे. ग्रुप 2 रो किछि एस्पेक्ट्स रे मध्ये पचाछि, ऑडिट रे मध्ये क्वेश्चन टा गुरथर आस्थिला. ऑडिट रो टाइप्स रे वी हैव जीएसटी ऑडिट. तो जीएसटी ऑडिट रे से पचारतिला कोन प्री जीएसटी रेजिम रे व्हाट वर दे लाइक रजिस्टरिंग अंडर. तो एबे कोन समस्त पे कॉमन गुटे पोर्टल हिची जीएसटी, बट हियर इट इज सर्विस प्रोवाइडर्स पे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, ट्रेडर्स पे वाट लॉस, मैन्युफैक्चरर्स पे कोन सेंट्रल एक्साइज एंड वाट. तो registration was multiple and fragmented by factory wise, state wise or premise wise. GST brought in one common registration system, that is PAN based, which is valid for all GST laws. GST laws रे जति कि जण अछंदी समस्त पे कोन this is valid and similar, and it is on the basis of what? PAN number. So PAN is the foundation system of the GST laws. The PAN based registration is the primary thing. एटा तो हम जानछ. तो फर्स्ट तीनटा जो अछि सेडा लिखि दियो. And again मु कहि दोची, your note is for your exam reference. Exam आगो दिनो कि exam दिनो कोन देखिबो से जिंस पई. Material is for overall studies. तापरे देखो what is registration under GST. Registration रो meaning होची legal recognition of a person as a supplier of the goods or services. The registration gives the legal recognition of a person as a supplier of goods or services, and it assigns a unique 15-digit GSTIN. GSTIN माने कोन? Goods and Service Tax code. एडी लेखा आइची बाबा. तो assumption कोन आले कहले सेडी लेखा आबा जिंस म पचारिन ना, तो से कोन नुआडा भाबी कहला कष्ट पड़ी. I appreciate that, मैं बुझी परली. Enables collection of tax and passing of ITC to recipients. अच्छा स्नेहा बढ़िया कहया. सप्लायर और रेसिपिएंट के स्नेहा से जोडा कहया सेडा समस्त पे जस्टिफाएबल, मान से आंसर टा केबे के भूल कहि परिबानी. This will actually be useful in the interview. ऐसे कहया तम पे सप्लायर हेले आउ का पे तो से रेसिपिएंट हेई थियोगा ना, तो आमे काउ हेले जस्टिफाई से करियानी कि ये सप्लायर ये रेसिपिएंट कहिगी. से पॉजिटिव थिंकिंग जीएसटी रे आन दोच. ओके, तो एक्चुअली रेसिपिएंट माने के? हु इज अ रेसिपिएंट? जब मिले माने कोन? आउ तो इंग्लिश आ सुनना कोन? पर्टिकुलर्स रा हम दीडा जिंस रोची कोन? Goods or service or amount. Two perspectives of recipient mu buझोच. Recipient of amount or recipient of goods. स्नेहा जोड़ा कहले सेडा मजाक भाबुछ ना कोन? मजाक नै सत्तरे अछि. मु भी सत्तरे कहूछ. Recipient of goods ना recipient of amount से दीडा जा जिंस देखियो पड़ियो. लेखन कोनडा कहि हसी दोच. क्रेजी दोच पूरा. Okay, what is the need for registration?
Without registration, a person cannot collect tax, cannot avail ITC. It ensures identification of taxpayer for proper tax compliance and monitoring, creates a nationwide system for credit flow and avoids tax evasion. So obviously what is the need for registration se pachariani hela janiba purpose pai khali question purpose pai. तो देखो GST नथिले like GST registration नथिले what he cannot do is he cannot collect tax or GST from the customers, or he cannot avail the benefit of ITC, which is input tax credit. Input tax credit and competition scheme are the most important topics in GST. Barambar question asuchi. For that we have to learn all these terms. Normal registration कौन, composition scheme कौन, ITC केमती avail होची से सब. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଡରଟା ଏପଟ ସେପଟ କଲି, ବଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଦେଇଛି. ଫାଇନ୍. what are the advantages ସେ ପଚାରିଥିଲା. So it's legally recognized as a supplier, authorized to collect GST and pass ITC, can claim ITC of taxes paid on inputs, seamless flow of credit across states, eligible for government contracts, e-commerce sales and tenders, builds customer trust. Okay. तो एडवांटेजेस रे डाबा मारिया जिंस 3-4टा अच्छी, भल जिंस 3-4टा अच्छी. तो भल जिंस यू कांट मिस. डाबा मारिया जिंस तो डाबा मारिया हो कौन सुबले सुबले नाल नहीं हो. ओके, लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सप्लायर एटा तो हम जानथिलो डेफिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रे. देन आसी पचारचे कोन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट जीएसटी और नॉट, एटा भी हम जानथिलो कोडा रे नीड फॉर रजिस्ट्रेशन रे. देन कैन क्लेम आईटीसी, से आईटीसी पेमेंट करिवो, कलेक्ट करिवो, जहां भी करिवो आईटीसी रिलेटेड जिंस जहां भी करिवो केतळ करि पारियो ओनली इफ इज हैविंग अ वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर. सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. देन एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. registration नथिले, जीएसटी registration नथिले, no government contract is actually recognized and no a. शुभम चुपचाप बइछि, तू कोन पे पार्टी करछ. कॉन्ट्रैक्ट ना कौन, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ना कौन. ई कॉमर्स सेल्स और टेंडर्स. टेंडर्स माने कौन, बिडिंग. बिडिंग माने कौन को कौन बोली माने नहीं था आड़ अधि वाले मुआ बुझी पारिनी. तो एडा गोटे जिंस टिके मन रखिबो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नथिले यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉमर्स सेल्स और टेंडर्स. ऑप्शन सेल सेक्शन 64 अनपेड क्विज कंपटीशन ना मुंडर जाऊनी पूरा. ओके फाइन. नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो, स्टेट स्पेसिफिक एंड 1 GSTIN per state or per union territory. पान बेस माने पान इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर. एबे जीएसटी नंबर दे दियो, पान पर दबो कहले से सुनेआनी. वी हैव टू गिव द पान एंड टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर. Single registration covers all GST laws, CGST, SGST, UTGST, IGST, compensation cess also. Put a question thila, compensation cess ପାଇଁ is GST registration valid or not? तो normally तो सब जानछनी valid कहिगी, but जदि जे पचार देला एमती तो टिके डाउट लागिबो कि is it valid or not. Compulsory above threshold turnover एडा गोटे अछि until देखो threshold माने कोन, the mandatory limit ता परे हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना करिया पड़िबो. बट जदि हमें मैंडेटरी लिमिट को क्रॉस ना करिकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करार अछि, आर वी एलिजिबल? यस वी कैन डू इट वॉलंटरीली. तो सी गोटे जिंस कहि देखो, इट इज कंपलसरी अबाउट द थ्रेशोल्ड टर्नओवर. थ्रेशोल्ड टर्नओवर कोन 20, 10 एंड 40 कैन आल्सो बी टेकन वॉलंटरीली इवन बिलो द थ्रेशोल्ड. बुझि पाला. तो ए दीडा पॉइंट्स वेरी इंपोर्टेंट लिखि दियो. कंपलसरी थ्रेशोल्ड ता माने जदि एडा थ्रेशोल्ड, how are you writing it, threshold ता जदि क्रॉस ही जोची एंड एडी जदि क्रॉस होनी तो क्रॉस ही होची तो कोन हबो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. जदि क्रॉस होनी तो वॉलंटरी. it's voluntary, completely voluntary.
अच्छा गोटे एग्जाम क्वेश्चन अच्छी है पाखरे लेख कैन अ पर्सन हैविंग डोंट गो विथ माय हैंडराइटिंग ना तो लेंस कार्ड बहुत मन पड़ियो तुमको मो हैंडराइटिंग जदी पूरा देखिकी तमे लिखियो जाय तो सुनिकी लेख कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस हाँ मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस multiple places of business in a state obtain separate obtain separate registration for each place of business. Answer this. पढ़ी on the basis of this I am asking a question so it is also your institute question. No yes go जल्दी नहीं पारिबो कि दरकार सेडा नहीं मु कहछि से नहीं पारिबो कि नहीं पारियो सेडा मु पचाछ के को श्रुति नहीं पारियो नब्बा सुजु एंदी कोन कहछि हबो ना नहीं पचाछ ना कोन संध्याले वर्षा हबो कि एली हिंदी सेडा कहि पारु उल्टा पिलाडा तमे तम कथार्थ ठीक नहीं गुटे कथा को पान नंबर गुटे थिले नहीं पारियोनी से कौन कही देखुन कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस in a state obtain separate registration for each place of business. Separate registration in a state से कही mark that. गोयला दरकार नहीं the answer is yes he can take कौन पाई कौन नहीं पारिबो ना नहीं रीजन कौन पाई माने देखो हाँ obviously there is a reason he is asking for a separate registration number within a state जदि से कही था beyond the state आमे कौन पढ़लु रेडी सेडी जाउछ टिके रो देखो एडी कौन लिखा है कोडी थिला स्टेट वाइज चैट जीपीटी पचारि आसी सीरियसली कोडी एडी हेलो मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस माने यू हैव अ डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस हियर बुझी पाला ना नहीं यू हैव अ डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस तो सीए कहूची कोन मते सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन दरकार रजिस्ट्रेशन नंबर गोटे रहबो ही इज आस्किंग फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन पहले कहले कोन नंबर इज डिफरेंट एंड रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट मु सेति पे मार्क करी के कहूची बुझी पाला ना नहीं जीएसटी आईएन जोडा अछि सेडा कोन 10 नंबर दबो कि सीए नै मते नंबर भल लाने मते फैंसी नंबर दरकार मते पिंक वाला कार्ड दरकार पिंक वाला बोर्ड दरकार मु सेति पे गोटे गोटे वर्ड देखो गई गोटे गोटे क्वेश्चन जदी इन एनालिसिस करि परियो नै किने हबो ऑन द बेस ऑफ वन प्रोविजन तू भाई तू रही जा तते मु पारे कहूछ नहीं पारियो नहीं ता इच्छा सेफ प्ले कोन लेखो एडी तळे सेति पे मु अंडरलाइन भी करली देखो सेपरेट रजिस्ट्रेशन माने मनर तार नेचर ऑफ बिजनेसेस बहुत प्रकार अछि इफ ही इज हैविंग अ राइस मिल
He is having a cashew factory, he is having a fashion industry, he is also having a food industry, so he will be having some separate registration for each thing. तर individual जो GST IN ଟା ରହିବ that's same, but GST registration ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରେ କୋର୍ଟ ରେ ହବ। ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାକୁ ଲୋନ୍ ଇଜିଲି ମିଳିବ, ତା କ୍ରେଡିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଇଜି ହବ, and ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ with reference to each individual things ଇଜିଲି ମିଳିବ। ଏଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ମ୍ୟାଥ୍ ରେ ଥିବା क्वेश्चन ଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଇଡି बस स्नेहा थिला मते एडा बेनिफिट कोन जान ना से मते इयर कहि द मते हेल्प करतो से लागे बसता जाऊ जोडी इच्छा से सेडी बसिया ना ताको लागु जे आगरे बसले से देखि डर जियो मते दूर टिके चळियो ची मुंडो नला 25 अच्छा बुझले बे कौन कहली सी तो कहछ दरकार नहीं कौन पेन हो तू किए भाई ताको जज करिया भाई सेटा से कहिछि कि हम सेपरेट अरे भाई देख मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अछि नेचर अछि ना कोन अछि से कहि ना हमको आ जदी गुटे स्टेट भितरे गुटे नेचर 10टा से काहेंगे करियो अगेन इट्स अप टू हिम से दिन जो हमरो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे गोटे वाइफ गोटे हस्बैंड थियो सीता वाइफ सॉरी गोटे वाइफ थियो सीता हस्बैंड को न पचारी कि जिंस किन दे थियो शॉपकीपर जाई कि ताको डिमांड करियो ये गाड़ी करछि मते इट्स अप टू यू दैट्स व्हाई से कहिछि हां सेडा हम प्रेजम्पशन एडा कहि कि जीएसटी भी मो पे डेंजर ही होछि सीए जदि रजिस्ट्रेशन मो कोन भूल करली सीए किए गोटे साड़ी किन देला एमटी ले मते कोन हां से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस लो वाला जो येडा थिला मोस्ट फनीएस्ट आई थिंक पूरा हमरो लेक्चर्स रे ए जे सब चले मो कोन कह देला लागी जे देखला देखो टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन state wise registration no centralized registration under GST one GST IN per state or union territory PAN based 15 digit number one principal place of business plus additional place of business separate registration allowed within a state for multiple place of business if opted सेते पे आगे पचाली ओके if opted ताको इच्छा थिले तू मु प्रेज्यूम करले नहीं okay certificate of registration कौन granted in form GST REC 06 कौन GST IN is a 15 digit structure 2 digits for the state 10 digits for the PAN 2 digits entity code and 1 digit checksum obviously से जहाँ भी दबा this is very important certificate of registration दा को गोटे क्वेश्चन आसो एबे तते मु पचारि why are you so gumshoe I didn't expect
ହେଲା एडवांटेजेस टा ऑलरेडी हमें देखिछु ना देखो पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हम्म हम्म से कोन दबो गोटे नंबर ता छारे जा ना ना किए दबो लोक कोनटा नेबे म फोन नंबर ना कोन चोपा गोटे धनी लोकर देखि तो गोटे नंबर ता सब सेडा दरकार अली कही हबो नंबर पे सब लोग सेलेक्ट कर हम्म हम्म Every supplier is liable to register in the state or union territory from where he makes taxable supply if aggregate turnover in the financial year exceeds 20 lakhs in the normal states or union territory, 10 lakhs in the special category states. Okay? Hmm? MMTN. For suppliers exclusively engaged in the supply of goods, government may enhance the limit up to 40 lakhs to the notified states. This is not still applicable. Se chahile kari paribo. Okay? कौन कहले लेख लेख मुझसे क्वेश्चन टा काट किस ओहो सेडा सेवन सिस्टर्स कार हमोर तो भाई पूरा कह दे सेवन सिस्टर्स कहले से कुछ कार से पचारे राखी बांधन ना नहीं कौन गिफ्ट देइछ तापर से कहया सेवन सिस्टर्स माने कौन लेखी थी ना से दिन कौन कहले 40 लाख टा लिखि देइथो मु अलगरे लिखुची इबे चार्ट बने दोची सेक्शन 22 हम्म तो सेटा नोटिफाइड स्टेट्स कोची नोटिफाइड स्टेट्स रे किछि ऐड होची अगेन एपटे सेपटे होची तो सेटा नोटिफाइड स्टेट्स आगा था देन एडा इन मोस्ट स्टेट्स नॉर्मली एडा फॉर गुड्स ना ना सेटा सेमिति नहीं सेटा रा अलगा परसेंटेज अछि एडा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टा बुझो 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट आप को गुड्स देखे कुछ मैन्युफैक्चरर गुड्स माने सप्लाई ऑफ गुड्स हाँ टोटल स्पेशल कैटेगरी रे 10 lakhs सात सिस्टर से कहला ना से दिन जे पढ़थिलो हां ओवरऑल from 40 lakhs of services amount
ଆଉଥରେ एटा ओवरऑल तमरो सेक्शन 22 ओके अगेन एटार बाइफर्केशन हेची फॉर द थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हैला इंस्टीट्यूट जो लाइक अटैचमेंट देची सेटा मध्ये लिखि दियो तमरो प्रति अटेम्प्ट रे थ्रेशोल्ड लिमिट्स पई गोटे अटैचमेंट दिया हबो मोस्ट ऑफ द केसेस से सेटा चेक होनी कौन कहले हाँ इंस्टीट्यूट अटैचमेंट से चेक करियो नो नीड मो सेटा कहि दउ सबले कोन हला पानी पियो न कोन लगे बेले देखो एडा गोटे कंट्रोवर्शियल टॉपिक ता जदी खासिले के मन पकोस तो बाकी समय खराब लागियो कि तांको के मन पकोनी आली तो इंदी के ऑफेंड करो जा तो टीचर्स तो चाहिए तांको केबे के मन पकोनी आला ताल तो कोन खराब लागियो ना लोकानो तू केते धीरे जल्दी जल्दी खुली के पिए तो किछि हबनी पिए मत देखले सीरियल मन पड़छ लोक मरियो थियो से कॉफी कप ता छाडियो नै से कॉफी कप ता इन धरथियो से धीरे आगा जिवो से मरजो गछे परे कांदियो हे तते की कहला म ले जाओ गोटे इंस्टीट्यूट लेटेस्ट अटैचमेंट ता ओके एडा नॉर्मल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तो एडा जो अबे मु लास्ट लेखेली सेडा फॉलो हबो टोटली तमे जो क्वेश्चन रे असेसमेंट करछ अच्छा तमे जो पचारले ए चार्ट रे क्लियर हबो हला बाइफर्केशन ला हिमाचल प्रदेश असम जेएंडके जीएसटी अगेन एते फनी क्वेश्चन तो हसवा उठे तंत्र लगे हस लगे चाहती समस्ते केबे ना केबे गोटे टीचर हो हाँ केबे भी सबो सुनील सेवन सिस्टर सेटा अतर केजा पळायला से दुख करछ आ कजन उडा बुली आसी नेकी इंद कोन खाली आसे मना रहिए हां
सिस्टर्स मानकर ब्रदर्स मान कणी आसी पार्शियलिटी कोन कहले इंस्टीट्यूट अटैचमेंट देछ तो सेडा ध्यान रखिया पड़ो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर स्किपिंग दैट और सी जदी देछि से सेडा रो पचारियो तो कहै मु जोडा कहै मु सेडा रो पचारे तमे न देखले का भूल से कहै कि देखो मु तुमको व्हाट्सएप रे इनविटेशन छाडची भोजी सरियला पर तुम देखले तुम भूल तुम आसिलोनी मु दबड़ मु देछि हां आ तो अरे को सातटा तो थिला आठटा केबे हे हल्ला कहले हसचु कौन पे सिस्टर्स भाई इतना क्यों पर्सनल लेना सेटे बेसी मुंडो नहीं होचो कौन ला तू मते चिन्ह रे डायरेक्टली कहनो मते कोन दरकार थिले सिटी बेस चिन्ह देछि मते के मते चिन्ह आईडी हल्ला कोन कहले 20 पड़िबो से खाली गुड्स कहछि कोन एक्सेप्ट हां हेले से अदरटा पड़िबो जो कैटेगरी लिखा है सेटा पड़िबो कॉपी पड़िबो क्वेश्चन दे बेडर पीयूष चार्जर सुनील बाहर पड़ो स्टैंड अप कॉमेडी कर देखो टिके अच्छी खाली एते जाई तापर क्वेश्चंस देबे रिलेटेड even if a person supplies exempt interest income from loan advances deposits he is considered engaged exclusively in goods for the threshold तो एटार कोन मीनिंग मु गोटे क्वेश्चन थ्रू रे तुमको बुझेबी ए प्रोविजन गुडा को भल से मन रखिबो even if the person supplies exempt interest income माने exempt जिंस मध्य किछि किछि जागा रे कोन थ्रेशोल्ड लिमिट काउंट हैला लगो इंक्लूड होची तो सेटा हमें देखिबा कोडा रे एग्रीगेट टर्नओवर रो पॉइंट रे एग्रीगेट टर्नओवर रो बहुत प्रकार प्रॉब्लम अछि मु सेग्रीगेटेड गुटे क्वेश्चन बनेछि जोडा रे कि तमरो एग्जाम क्वेश्चन सब कवर हेछि तो एति की मन रखो कि एग्जेम्प्ट इनकम किछि किछि जागा रे जोडी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करछि से जागा रे एग्रीगेट टर्नओवर रे ऐड होछि फाइन government may notify states where threshold is equal to 20 lakhs instead of 40 lakhs even for the exclusive good suppliers तो एडा गोटे एमितियार प्रोविजन ना जोडा कि माने मनोर आमे घरे का कोन पचारु कोन खाइबो कोन बनेबी तो तान कोन कहे जहां भी कुछ भी हैला तो से टाइप रो प्रोविजन ना गवर्नमेंट में नोटिफाई एनीथिंग केबे भी कोन भी से कहि परिबो से जदी कहि देला सेडा टर्नओवर अंडर रे पळा आसीबो न आले कोन कुछ भी अंडर रे जाउछ ओके तो मे नोटिफाई सम स्टेट्स तो एबे को जो अटैचमेंट देले जो मे नोटिफाइड होची एडा एबे को तो गवर्नमेंट केबे कोन नोटिफाई करिवो सेडा मो ध्यान रखियो पड़िबो एडा को धरि मु क्वेश्चन देबी तो एडा मन रखि तो से स्ट्रेट क्वेश्चन पचरियो रजिस्ट्रेशन रेते बुले केबे पचारनी तार जो क्वेश्चन अछि सब आसीबो तमरा आईटीसी और कंपोजिशन स्कीम रिलेटेड आगा आरसीएम मध्ये मु डिस्कस करथिली आरसीएम रे को प्रकार क्वेश्चन आसीबो मु कहिथिली लास्ट 9 सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 रो तमरो बेसिकली क्वेश्चंस आसीबो अगेन से ओला उबर से सब जिंस को धरि की क्वेश्चन आसीबो एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन जदि थिले को केसेस रे कोन कोन होची से जिंस रो क्वेश्चन आसीबो तो रजिस्ट्रेशन रो तमे एति की जिंस मन रखिबो अगेन आज्ञा कोन एति के कोन सल्ला चप्पा पार्ट सल्ला if a business is transferred including due to death of a sole proprietor successor or transferee is liable to register ए बुझुनी कहले गुथरे liable to register from the date of transfer or succession तो के ट्रांसफर के रजिस्टर करिवो के रजिस्टर करियो successor or the if business is transferred
including due to the death of a sole proprietor. गुट्टे आगा लोक एकला लोक से करथिला बिजनेस टा तार किए जो लीगल हेयर थिबो he will be liable to register आ ताकू कहियो मो बापा एबे मरि जाइछन्ती मो कोन पे जा सब करी कहले हबनी जो दिन रो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टा दिया आइछि से दिन रो करियो पड़ियो नाले से रजिस्ट्रेशन टा कोन हबो इनवैलिड काउंट हे जिवो ओके तो in case of amalgamation or demerger transferee liable from the date or ROC issues incorporation certificate giving effect to the order. The last provision is very important. तमे देखिबो कोन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रो तमरो क्वेश्चंस आसुची इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माने कोन केबेडो तुमको रजिस्ट्रेशन करया पे तमे लायबल बुझी पारलो केबेडो लायबल तो फर्स्ट केस से कोन कहू जदी बिजनेस टा ट्रांसफर हे जोची रीजन कौन से दीजिए ड्यू टू द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर सोल प्रोपराइटर सो द लीगल हेयर और द ट्रांसफरी इज लायबल टू रजिस्टर एडी से किछि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहनी ही इज लायबल टू रजिस्टर सेठी के कंसीडर करले कि ठीक अछि कि मरियला तो दे विल हैव देयर फॉर्मेलिटीज कहगी बट से सेकंड केस रे कहला कोन amalgamation or demerger व्हाट इज amalgamation when two companies are joining together merger नहीं amalgamation ali कहले पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कंपनी इज कोन माने तांकर एक्टिविटीज गुडा को सेग्रीगेट हेची मर्जर माने कोन टोटली दीडा जे कंपनी को इक्वल राइट्स पड़ोची amalgamation includes टेक ओवर बुझी पालरा नहीं amalgamation मर्जर के बे सेम जिंस नहीं के भाबुतिला दीडा जे सेम मु जानतो सामना पिल्लाडा एबे 12th रो आसीछु आई अंडरस्टैंड मु पचाची ऑनेस्टली के भाबितिला एडा कोन पढ़थिला ना मो ए जिंसटा फाइनल रे जानली आई एडमिट दिस मते प्रिसाइजली जान नथले फाइन तो अमलगमेशन इंक्लूड्स मर्जर तो दीडा जाको साइमल्टेनियस नहीं फाइन डीमर्जर माने कोन ब्रेकअप ताको पड़लानी तार जिंस प्रॉफिटेबल हेलानी लाइक ऑब्वियसली द यूनिट इज नॉट फंक्शनिंग बेटर द यूनिट इज नॉट फंक्शनिंग बेटर तो से केस रे कोन हबो दैट इज इंडिविजुअली एक्सक्लूडेड तो से केस रे मध्ये कोन डेट द आरओसी माने के रजिस्टर ऑफ कंपनीज इश्यूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर माने कोन ओके फाइन ऑर्डर माने कोन जो अमलगमेशन टा सक्सेसफुली हैला डीमर्जर टा सक्सेसफुली हैला कहि कि जदी किछि जिंस दिया होची देन से केस रे कोन अमलगमेशन से केस रे चुप से दिन रो तम कोन रजिस्ट्रेशन टा करयो पड़िबो तमर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होजी सेडा कोन पे रहता हस्चा मैं लेक्चर सोले गुटे जिंस कहबे I have to बता जी कहयार अछि बहुत हो गया देखो लास्ट पोर्शन पर्सन्स कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर जदी ए थ्रेशोल्ड ता क्रॉस भी होनी का कागो हमें कंपल्सरीली रजिस्टर करेबो पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ओके ए जिंस रो डिटेल माने ए जरो डिटेल एक्सप्लेनेशन ता मु देबी सप्लाई ऑफ गुड्स ले कहले कोन हो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहले कोन हो बट इज दिस इज योर ओवरऑल थिंग से सप्लाई कहिछ खाली सप्लाई कहिछ फर्स्ट ऑफ ऑल तो से कहिछ जदी इंटरस्टेट मैनर रे तमे किछि हेले जिंस सप्लाई करछ तो यू आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्ट्रेशन नंबर फाइन कोन कहलो casual taxable persons making taxable supply who is a casual taxable person ने casually ता ऊपर टैक्स पकेदा के एग्जांपल मु देख देखो ट्रेडर सेटअप्स अ टेम्पररी स्टॉल इन अनदर स्टेट हैला सीजनल कोन कहले राजस्थान आडे को आडे पड़ेला हिमालय
हाँ से जो रोड ऊपर बिकची सेटा तो हाँ सेटा है एग्जैक्टली सिटी पे एनआरटी एते पर्सनली नियोने ओके से कहियो को गोटे स्वीट टा बनै के आनियो कहि सेडी हमर पूरा फेमस जिंसटा हम एडी बनै की दउचो ऑब्वियसली से बहुत गोटे एमबीए स्कूल रो अधिक मार्केटिंग स्किल्स ता पाखरे थिबो तो ही गेट्स ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल तो पर्सन को से पर्सन मध्य जीएसटी नंबर जीएसटी अंडर रे आसुची देन पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एटा हम ऑलरेडी देखथिलु रिवर्स चार्ज मेकानिज्म कोन रेसिपिएंट टैक्स पेमेंट करियो ओके electronic commerce operator Amazon and Flipkart person supplying through e-commerce operator where operator is liable to collect tax at the source under section 52 तापरे non resident taxable persons making taxable supply माने foreign exhibitor जे भी अछि supplying goods at a trade fair in India तो हमर जो फालतू वाला ट्रेड फेयर जो हेई खाउची खडे सिंह रे को काम हो नै हां हैला नहीं नहीं जाउचंती पा लोक को जाउचंती जाउचंती कोन पे से भितरे पानी पूरी खाया पे जाउचंती आ कोन पे जाउचंती बाहर कोडी मिलनी तो ना हमें गल्लू ट्रेड फेयर बस मो पापा सते जाई थोची बुल्ली पड़ा अछि मो कोन पे खाई बुक जा भल थाउची बाकी बुक से दिन रहउनी non resident taxable person making taxable supply person required to deduct TDS under section 8 TDS under section 51 माने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लोकल अथॉरिटीज जा जाओ TDS कलेक्ट करिवार अछि से लोक से माने then persons required to collect TCS under section 52 input service distributors every person supplying online information and database access or retrieval services from outside India to a person in India other than a registered person any other class of persons as notified by the government on recommendation of GST council देखलो से गुट्टे जिंस रखिबो कोन I may notify something तो be ready for that माने एमति नै कि एडा आगा GST एडा तुम पढ़ देलो पूरा पंडित हेला नाही केबेले कोन हेले कहि दी मैं कुछ भी बोल सकता माने गुटे एरोगेंट गुटे इनला वालिया तारा बिहेवियर गवर्नमेंट रो केबेले कोन हेले कहि दो केबेले का वाले इंक्लूड कर दो केबेले का वाले बाहर कर दो मूड स्विंग नहीं भाई दिस इज नॉट मूड स्विंग कार गवर्नमेंट रो निर्मला दीदी रो कौन हाँ सेटा है ये मत फंसे दस ये फंसे ना कौन बाकी आई डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी विद द गवर्नमेंट हला दिस इज अ कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो चुप रह आगरे से कांटेक्ट करते हो मेंबरशिप नंबर है बेतियो फाइन किछि डाउट अछि कोन डाउट हां कोन करछो नाही कोइ कि हां करछो भाई बुझिला एडा मु बुझिनी एक्चुअली मु कहिछि ओवरव्यू डा ए लास्ट क्वेश्चन डा अछि सेडा मु डिटेल रे बुझेबी अगेन तो एते जे का कोन डाउट अछि पचारो नहीं ना हाँ ना कौन नहीं ठीक अच्छी थैंक यू सो मच